Okay. Incidentally, it was the Congress government that carried out the socio-economic caste census in 2011. Ashok from TV9. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, బట్ తెలంగాణలో సక్సెస్ ఎందుకు సాధించలేకపోయింది? అండ్ మీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ ఎక్కువ, చాలాసార్లు మీరు కాజ్ చేశారు, అయినా కానీ ప్రతిసారి గొడవలు అవుతూనే ఉంటాయి. సో దానికి సంబంధించి మీరు ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారా? तेलंगाना देने के बाद आपको तेलंगाना में सरकार नहीं बनी, इसका वजह क्या है? और इंटरनल कांग्रेस पॉलिटिक्स में बहुत सारा पॉलिटिकल गेम चल रहा है, उसको आपको आप अटेंशन ड्रा करने के बाद भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आप उसको कैसे रिजॉल्व करें? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है. हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप नहीं चलाती है. आपने देखा कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ और डेमोक्रेटिकली हमने अपने नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया. तो ये हमारा डीएनए है कि हम डिक्टेटरशिप नहीं चलाते हैं. तो थोड़ा डिस्कशन हमारी पार्टी में नेचुरल है, मगर जो हमारे लीडर्स हैं वो सब एक साथ लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी. हैव नो डाउट अबाउट दैट. Chari from NTV. Also, I'd like to ask a question. Of course, the Congress party has demonstrated that it is a democratic party by electing our president. And we have had an election across the country. I'm wondering when other political parties are going to do this. I'm wondering when the RSS and BJP are going to have an election, when the TRS is going to have an election. This is just a question I have in my mind. And it's interesting to me that the press always asks about the Congress party and about elections and democracy in the Congress party, but never ever dares to ask about democracy in the TRS or democracy in the RSS or democracy in the BJP. Chari. సార్, నేను చారి సార్, ఎన్టీవీ. మీరు 5 రోజుల పర్యటనలో ప్రతి చోట ఒక అంశాన్ని చెప్తున్నారు, టీఆర్ఎస్ బీజేపీ రెండు ఒకటే అని చెప్పేసి. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ బీజేపీ రెండు రాజకీయ ఘర్షణకు తెరదీస్తున్నాయి. రీసెంట్గా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేశారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. వీటిని ఎట్లా చూస్తారు? రెండు, కాంగ్రెస్లో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యమే కాంగ్రెస్కి కొంపముచ్చుతుంది అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణ. స్వేచ్ఛ ఉండడం మంచిదే, కానీ అతి ఎక్కువ కావడం వల్ల నాయకుల మధ్య ఘర్షణకు కూడా కారణమవుతుంది. He will answer only one question, please. He is only going to translate one. आप 5 दिन से यहाँ पद यात्रा कर रहा है, हर दिन आप TRS बीजेपी एक ही बोल के बोल रहा है, मगर आजकल तो चुनाव लड़ रहा है और एमएलए खरीदने का काम चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? आप बोल रहा लगे नीचे अलग हो रहा है आपका क्या? No, the fact that both these parties are spending hundreds of crores of rupees, the question needs to be asked, where is this money coming from? Obviously, this money is coming from corruption, and this money is being distributed blatantly without any regard for any rule or anything like that. So it shows the similarity of the two structures. It shows that both these parties steal public money and then use this public money to influence elections. Okay, Srinivas Rao from TV5. I'm going to be now extremely, we have to fast forward. Please keep your questions short. నమస్తే సార్, నా పేరు శ్రీనివాస్, TV5. ఒకటి, దేశంలో కాంగ్రెస్ పని అయిపోయింది, అందుకే దేశ ప్రజలంతా కూడా టీఆర్ఎస్ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. అందుకే కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పేరుతో నేషనల్ పార్టీ ఏర్పాటు అనేది ఒకటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు. అలాగే కాంగ్రెస్ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే ఎన్నికల్లో పోతుందని మీరు వరంగల్ సభలో చెప్పారు. అయినప్పటికీ కూడా భవిష్యత్తులో నేషనల్ పార్టీకి రీజనల్ పార్టీతో అవసరం ఉంటుంది, కాబట్టి టీఆర్ఎస్తో పొత్తుపోయే అవకాశం ఉందని మీ రాష్ట్ర నాయకులు కొంతమందిలో చర్చ జరుగుతుంది. केसीआर ने कुछ पार्टी कांग्रेस पार्टी खत्म हो गए देश में, इसीलिए अभी देश में एक नया राजनीतिक पार्टी के जरूरी है, इसीलिए केसीआर ने बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति लगाए, वो कह रहा है. और दूसरा, अगर आगे जाते जाते नेशनल लेवल के लिए रीजनल पार्टी का जरूरी है,
बाद में कांग्रेस और टीआरएस जोड़ने का भी कुछ मुद्दा चर्चा चल रहा है आपका? There is absolutely no question of the Congress having any relationship with the TRS. The Congress party has made this very clear. This confusion is created by the TRS themselves. I'll repeat it clearly, there's absolutely no question of any relationship between the TRS and the Congress. Number two, any leader has the right to imagine his party in whatever way he wants. If the Chief Minister of Telangana believes that he is running a national party, that's perfectly okay, there's no problem, he can believe it. If he believes that he's running a global party, that's also acceptable, that's also fine. So these are all things that he can do and he can imagine. He's welcome to think that no, I'm running an international party, one that is also fighting elections in the United States and fighting in China and other countries. Good, no problem. We are perfectly happy to accept it. Thank you. Siyasat se Riyaz Sorry, Sahab. the last point about the opposition. The fight in India today is between two ideologies. One ideology that is seeking to divide the nation, spread violence in the nation, and the other ideology that is bringing the nation together. And the line is very, very clear. I feel and the Congress party feels that it is very important that the opposition works together harmoniously to defeat the ideology of the RSS and the BJP. हाँ जी, सियासत से रियाज साहब. मैं मोहम्मद रियाज अहमद, सियासत उर्दू डेली. सर, मेरा सवाल ये है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करूंगा. भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए आप क्या समझते हैं कि आप कम्युनल एजेंडा और नफ़रत तोड़ने में कामयाब रहे? और दूसरी एक अहम बात यह है कि क्या आपने जो दौरा किया है अब तक, उसमें जो अवाम के मसाइल है, इश्यूज़ हैं, वो उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या देखी हैं आपने, वो हम जानना चाहेंगे. देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक विचारधारा है और एक सिंबल है, और जो बीजेपी की विचारधारा है उसके खिलाफ क्लैरिटी से एक दूसरी विचारधारा रखने का तरीका है. रास्ता लंबा है. बीजेपी से लड़ना, जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इन्होंने किया है, उससे लड़ना 2 मिनट का काम नहीं है. मगर भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छा कदम है. मुंसिफ से बशीरुद्दीन जी. बशीरुद्दीन जी बोलिए. मेरा सवाल ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा का जो फैसला है, आपका खुद का है या पार्टी का है? दूसरी बात यह है कि इससे क्या पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? क्या दोबारा इक़्तिदार में कांग्रेस वापस आएंगी? देखिए, किसका आइडिया था? जनरल डिस्कशन चल रहा था. बहुत साल पहले मैं यात्रा करना चाहता था, बट उस टाइम कोविड आ गया, फिर थोड़ा यात्रा करना मतलब मुश्किल हो गया, तो फिर हमने उसको एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया था. और फिर मेरे माइंड में था कि मैं पर्सनली हिंदुस्तान में पैदल चलना चाहता था, और मेरे माइंड में था. और फिर कांग्रेस पार्टी के भी 2-3 लोगों ने ये सुझाव दिया. तो अब मेरे माइंड में पहले आया या उनके माइंड में पहले आया, मालूम नहीं. आप ही के माइंड में पहले आया राहुल जी. एक्चुअली सच बोलूं तो पहली बार जब मैंने ये सोचा था, मैं 25-26 साल का था. उस टाइम मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं था, बट उस टाइम मैं नहीं कर पाया. तो मैंने सोचा कि
अंदर अंदर ये डिज़ायर तो था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये ज़रूर ये बीजेपी से, आरएसएस से लड़ने का तरीका है, राजनीतिक तरीका है और उससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। मगर मेरे लिए ये पर्सनल जर्नी भी है, तो मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी समझने को मिल रहा है। जो तेलंगाना की आपने बात कही, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, हम मिलके लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और जो हमारा जो फाउंडेशनल आइडिया है, विचारधारा है, उसको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे। मैं अभी हिंदी मीडिया से सवाल लूंगा। जैनेंद्र, संक्षिप्त में पूछेगा प्लीज, समय का बहुत अभाव है। ठीक है। राहुल जी, आप कहते हैं कि टीआरएस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आपके ही कुछ सहयोगी जैसे नीतीश कुमार है, जिनके साथ आप बिहार में सरकार चला रहे हैं, वो स्वागत करते हैं जब केसीआर पटना जाते हैं और एक राष्ट्रीय फ्रंट बनाने की बातें होती हैं जिसमें कि वो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं जिनकी सरकार में आप शामिल हैं। तो ये फिर आप कहते हो कि टीआरएस कंफ्यूजन फैला रही है, क्या इन चीजों से कंफ्यूजन नहीं फैलता? और राहुल जी, सवाल कंक्लूड कर लूं कि क्या भविष्य में 2024 में आप कहते हो कि तेलंगाना में कोई समझौता टीआरएस से नहीं होगा, क्या 24 में नौबत आएगी तो भी कांग्रेस टीआरएस के साथ कतई हाथ नहीं मिलाएगी किसी भी सूरत में? देखिए, सबसे पहले ये मैं नहीं कहता हूं, ये तेलंगाना की जो लीडरशिप है, कंबाइंड लीडरशिप है, वो कहती है। जो वो कह रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है और उस बेसिस पे एक्शन लेती है। नीतीश जी अगर ये टीआरएस से बातचीत करना चाहते हैं तो दैट इज हिज कंसर्न, दैट इज हिज डिजायर एंड ही इज वेलकम टू डू इट। बट फॉर अस, हमारे लिए तेलंगाना में वी आर वेरी क्लियर, वी कैनॉट स्टैंड with the corruption, the approach and the attitude of the TRS. The TRS is looting the people of Telangana. It is snatching land away from Dalits, from tribals. It is destroying the education system. It is privatizing the education system. We are diametrically opposed to everything they're doing.